ভদ্ৰা এছ একাডেমিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন বহুত ভালদৰে চলি আছে আৰু আপোনালোকে আমাৰ এই মক টেষ্ট ছিৰিজত এনৰলমেণ্ট কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰে। তো আমি ভদ্ৰা এছ একাডেমিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে এখন চিম্পল মক টেষ্ট পেপাৰ আপোনালোকৰ আগত প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই মক টেষ্ট পেপাৰখনে আপোনালোক সকলোকে লাভান্বিত কৰিব। Hello everyone, welcome to Bhadra IS Academy. Today in this particular video we are going to solve economics mock test series. So the procedure will be, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को कैसा आंसर देना है, मतलब हम लोग इसको एनालाइज करेंगे. So meantime you should be able to find your answer. If you find your answer, that means you are able to solve the question. Then I will provide you the answer as well, so you can cross check your answer. So let us begin with the mock test. पहला क्वेश्चन है, RBI uses the following instruments for quantitative control of credit. So which of the following are used by the RBI? Cash reserve ratio, bank rate, open market operation, margin requirement. तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? So let us analyze the question. So if you look at it, I have given this small diagram. So the tools used by RBI are divided into two parts, quantitative tools and qualitative tools. So if you look at the quantitative tools, जो question है, first is bank rate, repo rate, reverse repo, MSF, open market operation, then CRR, SLR. So from the option you can see margin requirement comes under qualitative tools, that is number 3. Okay, so the answer would be only 1, 2 and 3, cash reserve ratio, bank rate, open market operation, because margin requirements comes under qualitative tools. Therefore the answer to this particular question would be answer number C. Is this clear? So let us go to the next question. Question number 2. Among the causes of inflation, which of the following can be listed? Means what causes inflation? So let us look at this question. First is slow growth in agricultural output, possible. Increasing non-development expenditure of the government, possible. Rapid population growth, possible. So rapid growth in costly imports, possible. So now the thing is you have to see practically which one will be the correct answer. Okay, so the question is once again, ठीक से क्वेश्चन को देखिए, among the causes of inflation which of them can be listed? Okay, so the answer would be all the 4, because all the 4 can cause inflation. Okay, so that is answer, therefore answer is C. ठीक है, next question देखते हैं. An underdeveloped economy is generally characterized by, मतलब underdeveloped economy को हम कैसा characterize कर सकते हैं या define कर सकते हैं, मतलब उसका feature क्या होता है? First one, low per capita income, low rate of capital formation, low dependency ratio and workforce engaged in tertiary sector. Tertiary sector का मतलब क्या होता है? Service sector. तो इसका आंसर क्या हो सकता है? So if you look at it, let's analyze. So the dependency ratio एक ऑप्शन था उसमें, so low dependency ratio उसमें दिया था. Now what is dependency ratio? The population जो है, that is the children between 0 and 14 and those who are above 65. So this population depends on the working population for their livelihood, survival. Therefore in underdeveloped economy, normally what happens, the population 0 to 14 and population above 65 are very high. Therefore dependency ratio should be high, it cannot be low. Okay, so इसका आंसर फिर क्या हो सकता है? Answer is A, that is only 1 and 2. इसका मीनिंग क्या है? Underdeveloped economy में you have a low per capita income, मतलब GDP is low, and second capital formation, matlab the capital available is also very low. So other two things are not correct, so the answer would be A.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following items is the largest exported commodity from India in 2019-20? So this is like current affair analysis. तो अभी आप इसको देखिए. What do you think is the right answer? So in this particular section, if you don't know answer, it will be very difficult. Okay. So this I have taken from the economic survey. Okay. So the answer is, if you look at the analysis provided by economic survey, the largest component in 2011-12, 18.5 is petroleum products, that is exports. Also if you see 2019-20, also petroleum products 13.7. So definitely the answer would be petroleum products. So this is like a type of current affair question. So you should have a knowledge of current affair as far as the export, import, trade, etc. concerned. Next question, question number 5. In India, the concept of minimum needs program was launched in which 5-year plan period? So this is based on the planning in India. So what is the question? This is a direct straight question. So the answer would be 5th 5-year plan, in which the government of India sought to introduce the minimum needs program. Question number 6. The meaning of absolute poverty is, मतलब एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द क्वेश्चन. सो पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, और पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, और पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल, या पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट लेवल. ओके. सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, द आंसर वुड बी, it is basically the minimum calorie requirement. क्योंकि when you talk about absolute poverty means people do not have enough money to buy the basic minimum needs. That is nothing but at least the food. Okay, because clothes are not really that necessary. Okay, but food is the basic necessary for survival. So if you cannot even purchase, अगर हम food भी calorie भी खरीद नहीं सकते, तो that is what we call the absolute poverty. The next question, question number 7. Which of the following is or true of Niti Governing Council? This chapter is Niti Aayog. So Niti Aayog का जो governing council होता है, what is it all about? So which of the statements are correct about the governing council? तो पहला ऑप्शन देखिए statement, all the chief ministers of the state with legislative assembly are members. Union territories are represented by the LG, Lieutenant Governors. Niti so far, means till now, 2020, had 8 such governing council meetings, and the Prime Minister is the chairman of the governing council. तो इस चारों statements में कौन कौन सा statement सही है? Okay. So if you look at it, the PIB about the Niti Governing Council ka meeting, they had mentioned this. The Niti Governing Council, it comprises the Prime Minister of India is the chairman, so that option is correct. Chief Ministers of all states, okay, that is correct. And Lieutenant Governor of Andaman Nicobar Islands, because they are the union territories without legislative assembly. And 4 union ministers as ex officio. Okay, so this is officially given by PIB source about the governing council. So if you look at the question, what will be the answer? Answer 1 is correct, because all the CMs with the legislative assembly are members. अगर किसी यूनियन टेरिटरी होता है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होता है, so the LG, the in charge of the union territory, represents. Okay, and option 3, if you see Niti so far had 8 meetings, that is wrong, क्योंकि अभी तक 2020 तक नीति का सिर्फ 5 मीटिंग हुआ है. सो ऑप्शन 3 इज रॉन्ग, ऑल अदर ऑप्शंस आर करेक्ट. सो द आंसर विल बी डी, 1, 2 and 4. Okay, so this question is basically you should be familiar with नीति आयोग का स्ट्रक्चर, स्पेशली द गवर्निंग काउंसिल, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल था कुछ महीने को पहले, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस द यूनियन गवर्नमेंट ऑन हु शुड represent Delhi, okay, in the Niti Governing Council. So that's why this question has been given in that context. Question number 8.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन? ये क्वेश्चन क्यों दिया है? क्योंकि अभी ये कोरोना के टाइम में बहुत सारा न्यूज़पेपर में ऐसा डिस्कशन आया था वेदर इंडिया इज हेडिंग टूवर्ड्स स्टैगफ्लेशन. ओके, सो स्टैगफ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग एट अ वेरी हाई रेट. रिसेशन मतलब इकोनॉमी का जीडीपी प्रोडक्शन डाउन हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, फिर भी प्राइसेस बढ़ते जा रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है. और एडवर्स बीओपी राइजिंग वेजेस, वेजेस बढ़ रहा है एंड एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है. सो द आंसर वुड बी बी, recession plus inflation. So what is the meaning of stagflation? If you look at it, the word can be divided into two parts. First is stag. Stag refers to stagnation. So what is the meaning of stagnation? Stagnation का मतलब हम लोग हटक गए, स्टक हो गए. सो इकोनॉमी का प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है. उसी के साथ इकोनॉमी में कुछ कुछ कारण के वजह से प्राइस लेवल भी बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है. सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन. दैट मीन्स स्टैग्नेशन विथ इन्फ्लेशन. देयरफॉर आंसर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, ये इस बार यूपीएससी में भी पूछा था. इफ यू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट एंड कीप इट इन योर हैंड, व्हाट विल हैपन टू मनी सप्लाई? So this is similar to that, money supply, concept of money supply in India by RBI. So we have one measure called M1, that means the most liquid form of money. Okay, this is also called the narrow money, M1. So M1 में क्या क्या include किया है, that is the question. Option A, currency with the public. Option B, demand deposit with the bank. Option C, other deposits with RBI. And option D, all of the above. I mean, this is just a technical part. If you have my book, you can open and see all these things are given there. Okay, so इसका आंसर क्या है? This I am giving you from my book itself. So if you look at the definition of M1, M1 consists of coins and currency in circulation, that is with the public. Second is demand deposits with the bank of the public, then other deposits with the RBI. Okay, so if you look at the question, all things are correct. Therefore, the answer would be all of the above. Clear? Okay. Question number 10. Which of the following is or true of Mission Sambhav in Assam? So this was a scheme launched, okay, last 1 year ago. So what was this mission? It was under Swachh Bharat Mission Gramin that Assam launched a massive campaign called Mission Sambhav across the state. Option 2. The campaign was inaugurated by the Chief Minister of Assam in Morigao district. Option 3, the campaign wanted to build about say more than 1 lakh toilets to those houses who did not have toilet. So what do you think? So the answer is all of the above because everything is correct. Okay, so this was the scheme and since now इस बार यूपीएससी का नया सिलेबस में क्या दिया है, असम रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा, इसलिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपको ये क्वेश्चन दिया है. सो यू शुड बी फेमिलियर विथ सम ऑफ द स्कीम्स एक्टिविटीज़ डन बाय असम गवर्नमेंट और रिलेटेड टू एनीथिंग इन असम. क्वेश्चन नंबर 11. पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया था लास्ट ईयर में, मतलब 2019 का प्रीलिम्स में, in connection with the participatory notes. So if you look at it, participatory notes are related to or associated with Consolidated Fund of India, foreign institutional investor या WTO agreement या IMF grants to poor countries. तो इसमें आंसर होगा FII, foreign institutional investors. So the participatory notes are nothing but issued to the foreign institutional investors for investment purpose. Okay. Question number 12. Consider the following financial institutions in India. Okay, so this is the new syllabus for APSC. You have the financial market. Okay, so some question or the other can be asked for exam. First one, Industrial Finance Corporation of India. Second, Industrial Credit and Investment Corporation of India. Third, Industrial Development Bank of India, National Housing Bank. So the question is, फाइंड द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब जिसको पहला एस्टेब्लिश किया, जिसको बाद में एस्टेब्लिश किया. सो ऑल द 4. बेसिकली व्हाट इज द थिंग टेस्टेड हियर इज योर जीके.
current affair is a static knowledge, not current affair. It's a GK, general knowledge. So whether you know this static information. So if you see the solution is what? The IFCI is the oldest, 1948, then ICICI 1955, then Industrial IDBI 1964, then National Housing Bank 1988. Okay, so the option is A. Now you should study, ये सब आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि this is like a GK and these are famous institutions in India. And National Housing Bank was in the news because RBI transferred the National Housing Bank to central government. IDBI, okay, also very much in news, lot of questions come in that IDBI. Then ICICI also. So these are well known institutions, इसमें question पूछा जा सकता है. Question 13. Which one of the following statements is correct regarding the FRBM, Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003? So if you look at this one, it deals with fiscal deficit only or revenue deficit only, both fiscal and revenue deficit, neither fiscal nor revenue deficit. So those of you who know, or you can check it in my book, I have given this topic. So the answer would be FRBM Act actually deals with both fiscal and revenue deficit क्योंकि उसमें टारगेट दिया है गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कितना कम होना चाहिए और कितना होना चाहिए और रेवेन्यू डेफिसिट हर साल कितना कम होना चाहिए. सो दोज थिंग्स वर गिवन इन द ओरिजिनल FRBM एक्ट, सो देयरफॉर इट डील्स विद बोथ. ओके. क्वेश्चन नंबर 14. द बजट ब्रॉडली comprises in India, we have classified them into revenue budget and capital budget. Now which of the following items is or not come under the revenue budget? मतलब इसमें जो ऑप्शंस दिया है, स्टेटमेंट दिया है, उसमें कौन कौन सा आइटम रेवेन्यू बजट में नहीं आता है. फर्स्ट वन, प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज. नंबर 2, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट. एक्सपेंडिचर ऑन रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड वेरियस सर्विसेज. मार्केट लोन्स रेस्ड बाय द गवर्नमेंट. सो इस चारों में कौन कौन सा आता है रेवेन्यू बजट में और विच इज़ नॉट कमिंग अंडर द रेवेन्यू बजट? So the answer is only 4 because market loans come under capital budget. Okay, so 1, 2, 3 are part of the revenue budget. लेकिन market loans, when government borrows money, it goes to capital receipt. Okay, so for that you have to basically understand the revenue budget and capital budget. अगर आपने इसका पढ़ाई नहीं किया था अभी तक, अभी भी टाइम है. You can revise these things and get your concepts clear. You can refer to my book also. I have given the full discussion on this. Question number 15. So if you look at the question number 15, this is about Assam economy. Which of the following is or correct regarding the lead externally aided projects, that's a short form, is the LEAP in Assam? So the statements are, it has established, means Assam has established a dedicated cell called LEAP in the finance department. LEAP cell has been operational since February 17. Its emphasis is to mobilize more additional resources through externally aided projects. So which of the following statement is correct? Means you cannot answer this unless you know this. Okay, therefore this is like a current affair on Assam, you should know this. So the answer is all of the above. So I just wanted you to learn this, therefore I precisely kept this answer as all of the above. Means everything is correct. So you please learn this kind of things for preparation of the upcoming prelims exam. Okay. Next question देखते हैं, balance of payment. So BOP refers to what? मतलब BOP का definition क्या है? So what is the basic meaning of BOP, balance of payments? Transactions in the flow of capital, मतलब capital account transaction. Transactions relating to receipts and payment of invisible. Invisible का मतलब क्या है? Service trade. So whether India's trade with foreign countries on services or transaction relating only to exports and imports, that is called merchandise trade, or a system of record of all the economic transaction of a country with the rest of the world. So which is the correct meaning of BOP? So the answer, if you see, I am just showing you the chapter from my book on BOP. If you look at the very first paragraph, balance of payment is a statistical statement that systematically summarizes
for a specific time period the economic transactions of an economy with the rest of the world. So that is the answer. So what is the answer? Answer is D. आंसर इसको क्या होता है? चौथा आंसर डी, a systematic record of all economic transaction of a country with the rest of the world. That is the meaning of balance of payments. Question 17. The headquarters of OPEC. OPEC क्यों हमको याद रखना चाहिए? Because पेट्रोल का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, कम होता है, मतलब हर बार फ्लक्चुएट होता है और न्यूज़ में हमेशा पेट्रोल का न्यूज़ आता ही रहता है. तो अभी देखिए ये ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. तो ये जो पेट्रोल का प्राइस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया में, इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस किधर है? So this is like again GK type of question. So if you look at the OPEC का brief history, I have given you. You can pause the video and read the details carefully, because any question also can be asked from OPEC. Now our question relates to the last two lines. So if you look at the last two lines, नीचे देखिए, OPEC had its headquarters in Geneva, Switzerland in the first 5 years of existence. मतलब जब OPEC शुरू हुआ था तब इसका हेडक्वार्टर्स किधर था? जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड में. लेकिन उसका हेडक्वार्टर्स अभी शिफ्ट किया. वेयर इज इट शिफ्टेड टू? वियना. दैट इज फ्रॉम 1 सितंबर 1965. तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर क्या होगा? आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वियना, मीन्स सिंस 1965. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप? ओके, दिस इज अ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्ल्ड बैंक ग्रुप. तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर क्या क्या आता है? ऑप्शन स्टेटमेंट 1, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक. सो यू विल फाइंड दिस इन माई बुक ऑल्सो. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. सो if you see I have given you the book, my book of this economic, this chapter, I am just showing you the screenshot. Okay, so if you see there, IBRD, that is first, IDA, that is the second, and IFC, that is the third. Then you have a MIGA, and then you have one more, ICSID. So all these 5 together is what we call World Bank Group. तो अभी इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपको क्या क्या आया था? You have got 1, 2 and 3. क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट बैंक, दिस इज कॉल्ड द ब्रिक्स बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक. सो द ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, 1, 2 and 3. ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 19. असम गवर्नमेंट रिसीव्स मैक्सिमम रेवेन्यू. ओके, इट्स ऑन APSC because as you know 33 to 35% of questions should come from the Assam economy, Assam geography, history, etc. So I am also putting questions from Assam economy. So Assam receives maximum revenue from which of the following sources? Okay, so its share in central taxes और its own tax, असम गवर्नमेंट के अंदर जो टैक्सेस होता है स्टेट टैक्स, उसमें, या असम स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू, या नन ऑफ द अबव. So this you will get it from Assam budget. Okay, so the answer would be Assam gets the maximum revenue from its share in central taxes. Okay, so that is the answer. Question number 20. India is regarded as a country with a demographic dividend. This is due to what? So you have to know the concept called demographic dividend, because now the government in the last say 5, 6 years or 7 years has been talking about that India is in the right situation to reap the advantages of demographic dividend. So what is the concept of demographic dividend? That is the indirect question. So it's a high population in the age group of 15 years. It's a high population in the age group of 15 to 64 years. It's a high population in the age group above 65 years, or it's a high total population. Which one of the thing is? Because of that we have a demographic dividend. Answer is very easy. It should be answer B. If you have a working population in the age group of 15 to 64, they are able to work, they are able to contribute, because of which the dependency ratio also comes down, which we discussed already today, dependency ratio. Okay,
सो जब डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है इकोनॉमिक का बेनिफिट ज़्यादा हो सकता है. सो दिस बेनिफिट विच कम्स फ्रॉम द चेंज इन द पॉपुलेशन या चेंज इन द डेमोग्राफी उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड. ओके, सो बी फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट. क्वेश्चन 21. Which day is celebrated as the National Consumer Rights Day? Okay, so lot of new changes have been done in the Consumer Right Act. So now consumer can file a case if you are cheated on the product of the commodity or the quality or wrong information or wrong advertisement, etc. So there is a amendment to the Consumer Rights Act. So in that context मैंने ये क्वेश्चन दिया था कंज्यूमर राइट्स डे कब होता है. सो आंसर इज इजी, 24 December. So remember, one day before Christmas. So you will not forget the Consumer Rights Day. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन 22 देखिए, which of the following is or true regarding RBI का अकाउंटिंग ईयर. दिस इज अ करंट अफेयर क्वेश्चन. आपको ये पूछा जा सकता है एग्जाम में. So I have given quite a few details options here, not very easy to understand. However, हम इसको analyze करते हैं. ठीक है. So in 1940, RBI changed its accounting year, okay, to July to June. After nearly 8 decades, मतलब 80 साल, okay, after 80 years, the accounting year will start, मतलब अगला साल 21 में it will start from April. So it will become now April to March instead of July to June. Third statement है, Bimal Jalan Committee on Economic Capital Framework had actually proposed to change the accounting year. So which of these statements are correct? It's a little difficult question because it is current affair analysis. So answer is easy. I have provided here all of the above. मैंने purposely once again kept all of the above क्योंकि ये क्वेश्चन में सब स्टेटमेंट ज़रूर है फॉर एग्जाम. सो यू शुड नो ऑल द पॉसिबल थिंग्स. सो फर्स्ट थिंग इज यू शुड नो ये 1940 में आरबीआई ने अकाउंटिंग ईयर चेंज किया था. देन नेक्स्ट ईयर 21 में वापस ये चेंज होने वाला है. तो ये कौन सा कमेटी ने इसको रेकमेंड किया था? बिमल जलान कमेटी. ठीक है, सब चीज़ याद रखिए. अगर कुछ ना कुछ पूछा गया तो आपको इसमें आंसर देने का ईजी हो सकता है. क्वेश्चन 23 देखिए, दिस इज ऑल्सो करंट अफेयर बेस्ड, लिटिल टफ क्वेश्चन. Which of the following statements is or true regarding the National Bench of the Goods and Services Tax Appellate Tribunal? मतलब नॉर्मल ट्रिब्यूनल तो होता है, उसके बाद एक अपेलेट ट्रिब्यूनल नया वाला. सो पहला स्टेटमेंट, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ नेशनल बेंच ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपेलेट ट्रिब्यूनल इन 2019. दूसरा स्टेटमेंट, the National Bench of the Appellate Tribunal shall be situated at New Delhi and shall be presided over by its president and shall consist of one technical member and one technical member of the center and state. The GST Tax Appellate Tribunal is the forum of second appeal in GST laws. Okay, first appeal is somewhere else and it is the first common forum of dispute between center and state. अगर सेंटर स्टेट के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट है तो पहला इसमें जा सकता है. सो विच ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट? ऑल ऑफ द अबव. पर्पसली मैंने अगेन दिया था क्योंकि आपको ये सब पढ़ना ज़रूर है. सो प्लीज़ लर्न दिस थिंग्स. दिस इज़ अगेन करंट अफेयर एंड स्पेशली रिलेटेड टू जीएसटी, क्योंकि जीएसटी इज़ अ रेगुलर टॉपिक, एपीएससी में आ सकता है and you can expect something, either one or these two, whatever. So I have given all three statements are correct. Maybe you gather more information इस टॉपिक के ऊपर और थोड़ा पढ़ाई करो, मतलब एग्जाम में you can anticipate this question. क्वेश्चन नंबर 24. ये क्वेश्चन किसी किसी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए लेकिन कुछ नया स्टूडेंट्स को पता नहीं रहेगा शायद. सो व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मसाला बॉन्ड्स? सो नो, व्हाट इज द मसाला बॉन्ड? Masala bond is a bond that Indian corporate can issue a bond to a foreign investor, okay, outside India, and the foreign investor gives money to Indians and Indians denominate, means the dealing is done in the terms of Indian rupee. So foreigners are investing but denominated in Indian rupee. So therefore this is called masala, a kind of a mix. Okay, so that is a simple concept. Now देखिए the statements.
In 2016, HDFC became the first Indian company to issue masala bonds. In 2019, Kerala became the first state, okay, to tap masala bond market by in issuing the Kerala Infrastructure Investment Fund Board, whatever. Third option, masala bonds are those bonds issued outside India but denominated in Indian rupee. मैंने already आपको explain किया था. So option C, मतलब statement 3 will be correct. But what about statement 1 and 2? So the answer would be all are correct. So basically this question is for your knowledge and information. So you should know in 2016 HDFC became the first Indian company to issue masala bond, and Kerala became the first state in India to issue in 2019. So this is a mix of current affair, GK with the theory of masala bond. So I mixed all the three together in one question. Okay. So you try to understand and read more on this and find out more information about masala bonds and etc. So the last question in this mock test series, voting rights in IMF are distributed on the basis of what? तो आपको ये पता होना चाहिए IMF में जब कुछ मेजर डिसीजन लिया जाता है, हर मेंबर कंट्री उस डिसीजन के ऊपर वोट देते हैं. वोटिंग इज लाइक ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस. लेकिन इस वोटिंग सिस्टम कैसा होता है, दैट इज द क्वेश्चन. वन कंट्री वन वोट, या आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ शेयर इज देयर, शेयर ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब आपका जीडीपी कितना है, वर्ल्ड जीडीपी कितना है, उसमें आपका कितना परसेंटेज शेयर है, उसके ऊपर उतना शेयर आपको वोटिंग में मिलता है. थर्ड ऑप्शन, प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अगर आपका कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा वोट दे सकते, कम है तो कम दे सकते. या प्रोपोर्शन टू द कोटा, आपका आईएमएफ में कितना कोटा है उसके ऊपर आपका वोटिंग शेयर भी हो सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो आंसर इज डी. जो स्टूडेंट्स क्लास अटेंड किए थे उनको मैंने जब आईएमएफ एक्सप्लेन किया था, मैं बताया था आईएमएफ में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आईएमएफ कोटा सिस्टम. क्योंकि आईएमएफ में जब डिसीजन लिया जाता है इट इज़ बेस्ड ऑन योर कोटा. दैट्स व्हाई वी से द यूएसए डोमिनेट्स आईएमएफ. कैसा? क्योंकि ये यूएस का आईएमएफ में कोटा ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 17% इज द वोटिंग शेयर ऑफ यूएस इन द आईएमएफ, वेयर एज इंडिया का इट इज समवेयर 2.6 समथिंग. सो इट इज क्वाइट लो. ओके, therefore we say IMF is dominated by the rich countries, especially the United States. Because of this system, the IMF voting rights goes by the quota system. Okay, so now I have given most of these questions from my own book, and those of you who are still struggling to find study material for economics, you can purchase this book. आप इस बुक को ले सकते, ये मार्केट में अवेलेबल है और ऑनलाइन में भी अवेलेबल है, मतलब बद्रा आईएएस एकेडमी में अवेलेबल है, और बुक्स जुगाड़ में आप ऑनलाइन में भी ले सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू नीड कॉपी ऑफ दिस बुक यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर बद्रा आईएएस एकेडमी. सो दिस इज वन सेट ऑफ द इकोनॉमिक्स टेस्ट अंडर द मॉक टेस्ट सीरीज दैट वी आर लॉन्चिंग फ्रॉम बद्रा आईएएस एकेडमी. तो ऐसा ही हम लोग 12 सेट्स will be publishing. Now this is only 25 question because it is only economics. लेकिन आपको इसमें 4 सब्जेक्ट एक टेस्ट में आएगा, मतलब एक पेपर में आपको 100 क्वेश्चन मिलेगा. वैसा करंट अफेयर के ऊपर अलग पेपर है, असम इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के ऊपर अलग पेपर है, और फुल सिलेबस का ऊपर अलग अलग पेपर है. वैसा टोटल आपको ये पूरा सीरीज में टेस्ट में 12 क्वेश्चन मिलेगा, मतलब 12 क्वेश्चन पेपर. उसमें आपको कितना क्वेश्चंस मिल सकता है? 1200 क्वेश्चंस यू विल गेट टू सॉल्व, मतलब the most likely expected questions for APSC. Okay, so those of you who are interested to subscribe for our Bhadra IAS mock test series, which is starting very soon, you can contact this number and find out the rest of the information. I hope these questions are helpful to you, and if you are not familiar with these topics, आप अभी भी शुरू कर सकते हैं, आप अभी भी पढ़ सकते हैं. सो सब क्वेश्चंस को ठीक से देखो. अगर आपका इस क्वेश्चन में आंसर में कुछ डिसएग्रीमेंट है, ओके, सपोज यू डिसएग्री, और या आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टेक्ट मी, वी कैन डिस्कस. सो थैंक यू वेरी मच. विल सी यू इन द नेक्स्ट सम अदर क्लास.